Learn how to manage the salary, how to make your savings, how to, go through the family welfare as well. So we'll be talking about wealth management today. So good morning, everyone present here. As you know, we have gathered here to discuss something about wealth management today from Mr. Abhishek Goyal. Let's put our hands together and welcome Mr. Abhishek Goyal to our dais. I would request Ms. Arpita Kaur to felicitate Mr. Goyal, and also would request Anchal Verma and Jaspreet to escort her. Please put your hands together. And in the meanwhile, let me take the privilege to introduce him to all of you. Mr. Abhishek Goyal started his corporate career as sales executive in Blue Dart Express Limited and worked there for 4 years and left the organization at a designation of area head. He joined ING Vysya Life Insurance Limited in October 2002, and the designation held there was Senior Sales Manager. After that, in March 2005, joined Standard Chartered Bank as branch manager and worked till August of 2005. He got promoted to Associate Vice President and Regional and Insurance Manager in Dobney DAY AV Financial Services Private Limited. That's the name of an organization. Not only this, he has worked with HSBC and Associate Vice President in Wealth Management, and from September 2008 till date, he is working in Royal Bank of Scotland as the Assistant Vice President and Cluster Head in Bank Insurance. So let's put our hands together and welcome Mr. Goyal on the stage to give us some information about wealth management. All done your summer trainings? Everybody? I'm told this is third semester, right? So you've done your summer trainings. Who all were in financial institutions, maybe the banking or maybe NBFCs? You understand what's an NBFC? What's an NBFC? Absolutely. So anybody from NBFC or bank? None of you? क्या हो गया? Banking sector नीचे जा रहा है क्या? क्या हो गया? Only? You didn't take them. You promised you'll take them for summer training and you didn't take them. So then Was that so? Yes. All right. ठीक है, अब मैं ध्यान रख लूँगा. Okay. Any idea about banking? Anything that you have in mind? What do you do with the bank? What exactly do you do with the bank? Any idea? Anybody? Sorry? Save and invest. Bank manages the house finance. Beg your pardon? Bank manages our finance. Giving away loans. One second. Invest. Giving away loans. What else? What else? Have you ever thought about bank proposing a property to be bought? अजीब सा लग रहा है क्या? Sorry? HDFC does proposal of properties? Like for example, sir, ये property बहुत अच्छी है, ये ले लो. हाँ. Loans is different. Giving away loans is different. Giving away loans is different. Have you heard? You know what a property dealer does? You guys know, right? What does a property dealer do? What does a property dealer do? Absolutely, he helps you identify the property. He helps you actually purchase it or sell it. Okay, and in turn he charges commission. So have you ever thought about a bank doing property services? Have you ever heard of it? Okay, Standard Chartered does it. Standard Chartered, for that matter, has got a complete separate property division. Okay, they help the clients, for that matter, okay, to identify, to sell, to purchase properties. Okay, they did not come down to renting, but they definitely did property. Okay, have you ever heard a bank managing funds, as in mutual funds? Any idea? Okay, what is the company which manages mutual funds is called? What would you call a company which manages mutual funds? Am I audible? Am I audible? So let's keep it like this. So tell me, what
what is the company which manages funds, or a mutual fund company for that matter? What is it that is called? Absolutely. Asset management company, AMC. So a bank would typically. What was I talking about? Beg your pardon? When my salary come in, okay, it was holy time. You know, during Diwali and Holi, we give away gifts. Okay, so I saw my accountant moving out of the branch office, okay, carrying a gift, wanting to go to the bank, and I asked him, "What is it that you're doing this for?" And you know what he said? Bank है, उसमें gift देना पड़ता है. मैंने उससे पूछा, यार, we are the clients of the bank, right? We are the customers of the bank. So ideally speaking, like the way Blue Dart is giving away gifts to the customers, why are we giving away gifts to the bank? Because we are typically the clients of the bank, so the bank should ideally come back to us and give us the gift. Right? Fair ना? वो बोला ऐसे नहीं होता. बोला देना पड़ता है. बैंक में काम कराने पड़ते हैं. And that was an eye opener for me. And today, you know, as I talk to you, in the morning, okay, I was just ordering gifts to be given away to my clients. Okay, so from the bank, we are now giving away gifts to the clients. You know, some large corporate, multinational, and some good position holders. So we also give away gifts now. So there is nobody who's coming to the bank with a gift. It's basically us who's going to the client, reaching out to the client. Why am I telling you this? The facet, okay, of banking industry has completely undergone a paradigm shift from what it used to be to what it is now. It's a complete shift. Right? Traditionally, what will happen is typically, I remember Jaspal Bindra. He is the group CEO of Standard Chartered. You know, once in his town hall, वो ऐसे ही खड़ा था. वो बोलता है कि देखो, मैं बैंक हूँ. Okay, group CEO, right? बोलता है कि देखो मैं बैंक हूँ. मैं इस हाथ लेता हूँ और इस हाथ देता हूँ. Somebody said save, right? And then somebody said loans. So where does the loan come from? Where does the funding of the loan come from? From savings. So what is savings? Saving is a liability to the bank. You've all done accountancy? Accounts करा ना थोड़ा, right? मैं fail होता था वैसे. Okay. Accounts में what comes in is, what are you talking? What comes in? Coming into me. Not going from you, coming into me is credit. Right? Is credit. Now this credit that you've given to me, I am your bank, okay, is liability to me. Why is it called liability? क्योंकि मुझे उसे आपको वापस देना है. कल को अगर आपने डिमांड कर दी, मान लो आपने आज मेरे साथ 10 करोड़ रुपए रखा, कल को आकर आपने बोला यार 1 करोड़ वापस कर दे, तो इट्स अ लायबिलिटी टू मी. सो आई एम कीपिंग योर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटीज टू मी. सो द बैंक वर्क्स उल्टा. अकाउंट्स में जो आप लर्न करते हो उसको बिल्कुल उल्टा कर दो. सो द बैंक वर्क्स उल्टा. सिमिलरली लोन्स जब मैं आगे दे रहा हूं तो वो मुझे वापस मिलेगा ना, तो वो क्या हुआ? एग्जैक्टली, दैट्स एसेट. Asset and liability. These are the two sides of the bank. So typically what bank will do is, will take liabilities, will attract liabilities and will give away assets. In the process, what happens is, देखो fixed deposit का क्या रेट है? मान लो 10% है. मान लो 10% है. होम लोन का क्या रेट है आजकल? अगर 10% FD का रेट है तो होम लोन का कितना रेट होगा? 11% हो जाएगा. In the process, bank will earn 1%. And that 1% is so huge. Okay, though there are other avenues for the bank to earn revenue from, okay, that 1% is so huge that people like me, okay, and so many of them like me, okay, exist in the bank, on the payrolls. So that's typically a bank. Traditionally, bank ऐसा होता था. फिर बैंकों ने कहा, यार ये तो हो गया, all right, you're attracting liabilities, you're giving away assets, right? ये तो हो गया. अभी क्या करना है? Let us understand, let us start earning revenue. Why can't we sell products? Why can't we sell services? Okay, so the bank started diversifying. The first and the foremost and the very, very basic diversification was investment. तो ऐसा हुआ कि UTI का म्यूचुअल फंड निकला एक जमाने में. ऑलराइट, UTI का म्यूचुअल फंड निकला. उन लोगों ने सबको बोला कि भाई आप हमारा म्यूचुअल फंड आप प्रमोट करो, बिकॉज बैंक हैज एन एक्जिस्टिंग सेट ऑफ कस्टमर्स. यू अंडरस्टैंड, अ टिपिकल बैंक इज अ हब. इट्स अ हब ऑफ द कस्टमर्स. यू नो, all the customers or anybody for that matter, obviously, I mean, if you have 10 lakh rupees in cash, would you want to sit on cash at home? No, you would want to deposit it in the bank for the safety purposes,
ऑलराइट, आप जाके डिपॉजिट करोगे तो आप मेरे क्लाइंट बन गए. जब आप मेरे क्लाइंट बन गए तो आप आइडियली मेरे प्रोस्पेक्ट बन गए. यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ प्रोस्पेक्ट? यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ प्रोस्पेक्ट, राइट? ओके, किसी को भी जिसको मैं बेच सकता हूं, कस्टमर मैं अपना बना सकता हूं, वो मेरा प्रोस्पेक्ट बन जाता है. राइट, आई वुड कॉल हिम अ प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्टस आपका इंस्टीट्यूट का होता है ना, प्रोस्पेक्टस. सो दैट्स बेसिकली दैट्स वर्ड डेरिवेशन, राइट? प्रोस्पेक्ट. तो आप मेरे प्रोस्पेक्ट बन जाते हो. तो यूटीआई मेरे को अप्रोच करता है और बोलता है कि देखो भैया, आपके पास एक्जिस्टिंग सेट ऑफ क्लाइंटेल है, व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट सेलिंग अक्रॉस दीज म्यूचुअल फंड्स, यू नो, माय म्यूचुअल फंड, यू स्टार्ट सेलिंग देम अक्रॉस. व्हाट इज टिपिकली अ म्यूचुअल फंड? अ म्यूचुअल फंड, यू नो, यू ऑल नो, आई एम श्योर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, राइट? गुड. सो म्यूचुअल फंड वो आएगा मेरे पास, मेरे को बोलेगा आप मेरा म्यूचुअल फंड बेचो, मैं आपको कमीशन देता हूं. So I will start selling mutual funds. Okay. Now when I started selling mutual funds, one fine day, LIC of India approached and they said, look, if you are selling mutual funds, okay, why can't you sell life insurance? And I thought about it and I said, yeah, well, why not? You know, I've got an existing set of clientele, right? Everybody needs insurance for tax saving purposes, okay, for financial planning, for coverage purposes, okay, and so on and so forth. Well, why not? Let me start selling life insurance as well. So I started selling life insurance. Right? And from there, the genesis of wealth management happened. So the banks, which got swanky in nature, okay, they really got swanky, chic, hip, ekdam, must, जिसे कहते हैं. If you enter into a bank, I remember for the first time when I entered into a multinational bank, there was I think Standard Chartered, no, ING Vesta. When I entered into ING Vesta, as a multinational organization, okay, I remember I was entering for an interview about in the year 2002, I guess 2002, right? I remember, you know, I almost slipped. The floor was such clean, sweeping clean, okay, and such a swanky office that I almost slipped because adat nahi thi. So these chic and these hip organizations started coming in, and this euphemism, you understand, blown up, okay. So euphemistic, okay, this terminology of wealth management happened. Now what is wealth management? Wealth management, wealth क्या होता है? पैसा होता है. तो अगर मेरे पास पैसा है, तो मैं आइडियली एक प्रोस्पेक्ट हूं बैंक के लिए. और जब अगर मैं प्रोस्पेक्ट हूं बैंक के लिए, तो ऑब्वियसली द बैंकर्स would approach me and would want, okay, me to buy something from them, whether it's a mutual fund or a life insurance or anything. So typically, what does a wealth management concept, as a concept, do I have a pen here, marker? I don't think there's any. Yeah, there are. ठीक है, I hope these right. So this concept, this term of wealth management was coined from there. You know, people were not comfortable being called कि ये एजेंट है. LIC का एजेंट देखा आप लोगों ने? डैडी को आता होगा, बेच के जाता होगा, सर ये वाली पॉलिसी ले लो, बहुत मस्त पॉलिसी है, सर ऐसी पॉलिसी नहीं मिलेगी दोबारा, सर बंद होने वाली ये वाली पॉलिसी. तो आप उसको कैसे देखते हो? एजेंट देखते हो ना, ऐसे है ना, एजेंट है ये. अच्छा, और वो टिपिकली ना वो कपड़े भी ऐसे पहन के आता है. यू रिमेंबर? वो कपड़े भी ऐसे ही पहन के आता है. उसकी चेक वाली एक शर्ट होगी जो कि उसने शायद न्यू प्लेस के वो पटरे से खरीदी होगी. यू नो, एक वो अपने स्कूटर या मोटरसाइकिल पर आएगा. ही विल टिपिकली नॉट बी इन अ कार. नॉर्मली ही विल नॉट बी इन अ कार. ओके, सर ये वाली पॉलिसी ले लो. अब बैंक्स बोलते हैं यार, ऑब्वियसली वी कांट बी ब्लडी कॉल्ड एन एजेंट यार, कम ऑन. I mean, this is crazy. We can't be called a agent. So what do? So let us call ourselves relationship managers. So from there came the term relationship managers. Okay. Now what does a relationship manager do? Sorry. Yeah. What kind of relations are we talking about? Was purely in the banking context. So, no,
A relationship manager is not about building relations, unfortunately. It's an extension in hierarchy given these days. It's a new name given to the basic executive, right? Yeah, you're near about. Okay, what I am asking for is basically the concept of a relationship manager. What you're telling me is that कि उसको बना दिया, हुआ बना दिया है, which is all right, and I agree to it. Okay. The banker who is directly related Sorry, beg your pardon. the banker who is directly related to the customer. Yes, very true, very very true. manages long-term relationship with the customer. That's why we wanted him to himself to be called as relationship manager. कभी इंटरव्यू में जाओ ना किसी बैंक में, और अगर उसने किसी ने सवाल पूछ लिया तो ये लॉन्ग टर्म वर्ड जरूर यूज करना. यूल पिक्ड अप लाइक दिस, यूल गेट पिक्ड अप लाइक दिस. लॉन्ग टर्म वर्ड जरूर यूज कर लेना, ठीक है. रिलेशनशिप मैनेजर्स, okay, I'll come to that towards the end of the lecture. I'll come to that as to why did I say this. Okay, so typically let's say there are about 60 people here. Okay, let us divide in the groups of 10 for example. Okay, तो होगा क्या, 6 ग्रुप बन जाएंगे. अब एक बैंक में ये 6 रिलेशनशिप मैनेजर हैं. ये एक बैंक में ये 6 रिलेशनशिप मैनेजर है. हर एक रिलेशनशिप मैनेजर उन 10-10 क्लाइंट को केटर करेगा. क्या केटर करेगा, क्या केटर करेगा? सर आपका कुछ भी मतलब पड़ा ना बैंक से, आई एम योर सिंगल स्टॉप शॉप, आई एम योर वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कुछ भी काम पड़ेगा, आपको चेकबुक तक चाहिए, आपको कैश भिजवाना है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए. यू रिमेंबर हम लोग चाहते थे वो केनरा बैंक की ब्रांच ना बंद हो जाए, हम लोग उससे पहले पहुंच जाए. मैंने भी करा ऐसा इंस्टॉलमेंट्स की वजह से कि वहां पर पहुंच जाए, हम लोग टाइम से पहुंच जाए. ठीक है. अभी क्या करता है रिलेशनशिप मैनेजर, सर आपको क्यों आने की जरूरत है, आप बोलो मेरे को फोन करो, आई विल सेंड अक्रॉस माय रनर, ही विल कैरी द कैश फ्रॉम यू बैक टू द बैंक, एंड फ्रॉम द टाइम ही पिक्स अप फ्रॉम यू till the time he enters the bank, your cash is insured, so that let's say the runner gets robbed in between, your cash is insured, sir. Okay, तो मैं आपसे कैश भी पिकअप कर लूंगा और आपके बैंक में डिपॉजिट भी कर दूंगा. अच्छा आपको स्टेटमेंट चाहिए सर, मैं आपको स्टेटमेंट भिजवा देता हूं. आप आते क्यों हो सर, मैं आपको स्टेटमेंट भिजवा देता हूं. आप बैंक मत आओ. So much so, HDFC and Citibank have a charge of over the counter transaction. अगर आप वहां पर 200 रुपए जमा कराने गए हो ना एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी आपसे 100 रुपए चार्ज कर लेगा, क्योंकि आपने ओटीसी करी है, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन करी है. ठीक है, तो वो चार्ज कर लेंगे. सो दे विल डिस्करेज फॉर पीपल टू कम इनटू द बैंक, यू नो, बिकॉज द बैंक्स वांट दैट यू गेट इन टच विद योर रिलेशनशिप मैनेजर. एंड व्हाई डू यू गेट इन टच विद योर रिलेशनशिप मैनेजर? यार जब इतने काम मैं कर रहा हूं तो कुछ तो खरीदोगे ना मुझसे. करेक्ट, करेक्ट. So, am I making sense? Making sense ना? जब इतने काम कर रहा हूं सर, आपको स्टेटमेंट चाहिए. कस्टमर तो इतने पागल हो जाते हैं कभी कभी, वो रात को 11 बजे फोन करके बोलता है कि मुझे हर हालत में भी स्टेटमेंट चाहिए, मेरे को एडवांस टैक्स की फाइलिंग करनी है, कुछ भी करो मेरे को ये स्टेटमेंट अभी चाहिए. एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग अप इन द नाइट, गोइंग टू द ब्रांच, लॉगिंग इन, taking out the statement, sending it across to the client, and sometimes, you know, at times, because the client is not available at the registered email ID, you understand what's a registered email ID? Registered email ID is the one which is registered with the bank. So if I have to make any email transaction with the customer, I can only do it on the registered email ID. अब client ये बोल रहा है कि मैं भी registered email ID अपना नहीं access कर सकता, आप दूसरे email ID पे भेज दो. वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो पॉलिसी नहीं है मेरे बैंक की. तो मैं उसका स्टेटमेंट लेकर रात को 12 बजे उसको डिलीवर करने जा रहा हूँ. आई हैव सीन रिलेशनशिप मैनेजर्स डूइंग दैट एज वेल. अब जब ऐसा करूंगा तो वो स्टेटमेंट देते हुए, सर कल आ जाऊं, एक म्यूचुअल फंड साइन कराऊंगा, मना थोड़ी करेगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स. ओके, द ग्रुप दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, 10 customers, is known as the customer base. See, this is my third bank that I am working at. Okay, I've worked at Stancy, I've worked at HSBC, and now I'm working with RBS. Primarily, RBS was earlier known as ABN AMRO. ABN AMRO took over Bank of America. So, practically speaking, RBS is the third offshoot of the original Bank of America, right? So, this is my third bank, and these terms that I'm coining here are just about generic in any bank.
आप किसी भी बैंक में चले जाओ, ये सारे के सारे टर्म्स आपको एज इट इज मिलेंगे. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर टर्म स्पेसिफिक टू वन बैंक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है. सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स दैट यू विल फाइंड आर एब्सोल्युटली जेनेरिक. ठीक है. तो अभी ये कस्टमर बेस है. अब कस्टमर बेस में there are two things. इस कस्टमर बेस में मान लेते हैं मैं एक रिलेशनशिप मैनेजर हूं. There are two things, AUA and AUM. Any idea? Can anybody tell me as to what does this mean? Anybody? Simple है, 2 मिनट तुक्का लगाते हैं. Try it. अच्छा ठीक है. दोनों में जो पहला वाला ए है उसका मतलब होता है एसेट. जो दूसरा यू है, दोनों में ए यू है. दूसरा जो यू है दैट्स अंडर, एसेट्स अंडर. एब्सोल्युटली. Assets under management. So assets under administration and assets under management. ये दो terminology all the banks will use. Okay, for a customer base. So if there is a customer base will typically have a book. That book can be best described as AUA and AUM. What is the difference between AUA and AUM? Administration और management में क्या फर्क हुआ? AUA would typically have AUA would typically have anything and everything, the entire size of the customer with me. So if customer has got a penny anywhere but with me or through me, then I would call it AUA. SA is savings account. TD is term deposit or fixed deposit. Okay, mutual fund holdings plus life insurance. Got it? What is AUM? Only the mutual fund holdings and the life insurance part of it is known as AUM. So a wealth manager or a relationship manager, okay, will have his base ka AUA and AUM. So AUM is typically a subset of AUA. Right? Right? Any questions till now? See, this is very basic that we're touching upon. Very, very basic. Any questions? That's it? Right, fantastic. Okay, so a relationship manager, what he will typically do is, वो अपने सारे clients को जो कि उसके customer base में है, उनको contact करेगा और उनको बोलता है कि देखो सर, आपका relationship manager मैं हूँ. अगर आपको बैंक से कुछ भी मतलब है, कुछ भी लेना देना, कुछ भी करना है, ठीक है, तो आपका मैं one stop shop हूँ. ठीक है, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कुछ इंश्योरेंस खरीदनी है, आपको कुछ भी करना है, आप मुझसे बात करो. सो मच सो, अगर आपको फॉरेक्स भी करना है, फॉरेक्स यू अंडरस्टैंड? I am in UK. I wish to send across my dad some money. Okay. So when I send across in euros or I send across in pounds. Okay. But the money reaches here in INR. So what I have to do is I have to speak to my relationship manager and tell him or her that, look, dude, I'm sending across this much money. Please change it and give it across to my dad. So this is forex. So आपका कोई मतलब पड़ा है बैंक से, मैं हूं, बस आप मुझसे कुछ खरीद लो. So that's wealth management. Okay. Now what is this? Wealth management is typically third party products. The bank is not licensed or not allowed to manufacture these products. Yes, you can, but you have to set up a separate company. For example, HSBC. HSBC has HSBC AMC. HSBC has Canara OBC HSBC Life Insurance Company. You've heard of it? You've heard of it? Hello? Huh? नहीं सुना है? Okay. Maybe that's because, you know, that's more to do in the banking space. Okay, they're yet to come actually retail. Okay.
मे बी विल टच अपॉन इंश्योरेंस सम अदर टाइम. सो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेरे को कमीशन दे करके जाते हैं जब मैं अपने कस्टमर को बेचता हूं. ओके, नाउ हाउ डज वेल्थ मैनेजमेंट वर्क? In any kind of banking, in any kind of bank or banking fraternity, when I say fraternity, I also mean NBFCs. Okay, there are tiers of banking, tiers, levels. There are tiers of banking. Okay. This is known as mass banking or general banking. सबसे नीचे वाला, मतलब इसका कोई माई बाप नहीं होता है. एक बैंक में इस बेचारे कस्टमर का कोई माई बाप नहीं है. वो अपने आप आएगा बैंक में, वो डील करेगा. HSBC में उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म सर्विस एग्जीक्यूटिव. अगर आप बैंक की लॉबी में घुस जाते हो तो वो बोलता है ना, एक बड़ी अच्छी सी लड़की या लड़का कुछ बोलेगा आपसे, सर मे आई हेल्प यू. ठीक है, वो वाला होता है. ठीक है, तो आपको कोई माई बाप नहीं है. मतलब आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप मेरे रिलेशनशिप मैनेजर. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो वहां पर जो लॉबी में बैठा हुआ है या प्लेटफॉर्म पर जो बैठा हुआ है, दैट इज द पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड. इसमें आपका जो बैंक बोलता है कि मिनिमम, जैसे केनरा बैंक बोलता है कि 500 रुपये रखो. ठीक है, तो इसमें जो है बैंक अपना वो बना सकता है. जैसे HSBC बोलता है कि आप मेरे साथ मिनिमम 10,000 रुपये मेंटेन करो. ऑलराइट. RBS बोलता है कि आप मिनिमम मेरे साथ 25,000 रुपये मेंटेन करो. यू नो, थिंग्स लाइक दैट. ओके, तो ये मास बैंकिंग और जनरल बैंकिंग वाले कस्टमर बेचारे सारे यहाँ आते हैं. ओके, फिर उसके बाद टीयर 2 आता है. टीयर 2 में they've got Excel banking in Standard Chartered. Okay, Power Vantage banking in HSBC. Okay, personal banking in RBS. Okay, and so on and so forth. You know, they have fancy names. Okay, so ये जो टीयर 2 बैंकिंग होती है, इसमें एक रिलेशनशिप मैनेजर के पास कुछ नहीं तो 700-800 क्लाइंट होंगे. मतलब उसको खुद को मालूम ही नहीं होगा कि कितने क्लाइंट हैं. एक्चुअली स्पीकिंग, आप किसी भी रिलेशनशिप मैनेजर से, अगर आप किसी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के रिलेशनशिप मैनेजर को जानते हो जो एक्सेल बैंकिंग में रिलेशनशिप मैनेजर से जाकर पूछो, ये तेरे पास क्लाइंट कितने हैं, वो बोलेगा 300-400 तो होंगे. एंड रियलिटी उसके पास 700-800 होंगे. पता ही नहीं होता है. ठीक है, तो वो ऐसे सब्जी की तरह भरे हुए होते हैं सारे क्लाइंट. ठीक है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं पता चलता. अगर कल को किसी ने सर यू आर माई रिलेशनशिप मैनेजर, उसको फोन कर दिया तो वो बोलेगा कौन है, पागल हो गया, वैसे बोलेगा फालतू में. Obviously, the relationship managers would not want to work for somebody whom they don't know or who's out of their base, though it is in the base. But he says that it is out of the base, so out of the base. ठीक है भैया. तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जी की तरह भरे रहते हैं. फिर उसके बाद टीयर 3 आता है. टीयर 3, RBS would typically call it Van Gogh Preferred Banking, VANGOGH, Van Gogh, fancy नाम. Standard Chart will call it Priority Banking, PRB. Okay, HSBC would call it Premier Banking.